Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me and my name is Ananya Tyagi. For those of you who are watching me for the first time, welcome to this vlog. I don't know if it is a vlog or just a normal recipe video. So today I was trying out something new. I was trying out Navratna Korma, which was specifically demanded by my father-in-law. Yesterday we were having a conversation and I made paneer as usual because that is what I make the most. But he said, you know what, you should try mixed vegetable or something like Navratna Korma. So I thought, yeah, maybe why not. So I looked up a recipe on YouTube and I came up with one uh, from which I could take the most inspiration from, and I'm trying my version now. So yeah, let's get into the video. I just blinked it some items. I just blinked it some items. Blinked it? I don't know. What? So I just ordered some items from Blinkit right now and I'm waiting for those to arrive. Till then I thought I should shoot an intro video. So yeah, let's get into the video. We're in the kitchen and the first thing that we'll need is a gobi. अब गोभी के हमें काट लेना है छोटे छोटे से फ्लोरेट्स. अरे बच्चे शोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सुना ही आ रहा होगा क्या? तो जो आइडियल साइज़ होगा गोभी के फ्लोरेट्स का वो होगा ये इतना बड़ा, इसलिए क्योंकि गोभी थोड़ा बहुत कुकिंग के टाइम पर भी टूटती है. तो हम हल्का सा बड़ा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस साइज़. एंड मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो हो सकता है मेरे हाथ पे बड़ा लग रहा हो ये, बट ये एक्चुअल में छोटा है. देन वी आर टेकिंग 2 कैरेट्स एंड वी विल रफली चॉप देम. आपको मेक श्योर करना है कि इस कैरेट के जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे ना हो, बिकॉज़ कोरमा से उसको हलवा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर वो रफली चॉप्ड होंगे एकदम तो ही बेटर रहेगा. मतलब अगर वो फाइनली चॉप कर दोगे आप तो उसको हलवा बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि कोरमा बहुत ही ज़्यादा प्रिसिजन और बहुत ही धीमी धीमी आंच पे बनता है. तो यू कैन नेवर गारंटी, एंड दोज हु लव कुकिंग वुड अग्री विद मी कि दैट चॉपिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आप क्या बना रहे हो उस पर. I think chopping plays a very important role in whatever you make. मतलब it can make or break the dish easily. So now I'm cutting some French beans. Like, you could cut them into perfect rectangle or perfect square, but परफेक्ट के चक्कर में बहुत बार सब्जियां जो है वो वेस्ट हो जाती हैं. सो आई वुड रिकमेंड, इंस्टेड ऑफ परफेक्ट, यू ट्राई टू कट देम इनटू इक्वल पार्ट्स. दैट इज़ माय रिकमेंडेशन. नाउ वी विल कट some alus, and the same recommendation for aloo as well. You could try to cut it in cubes or rectangle, but I would suggest to cut them like averagely in the same proportions, like roughly. So now I'm going to start cooking, and I've also chopped a ginger roughly that I've not shown in the video because I forgot. So now we are going to cook, and I may not be able to speak that much, but I will put in the caption what all I'm adding and in the description as well. And also this is a no onion and no garlic special for Navaratri. So yeah, if you want you can add garlic and onion, but I think it will only make the dish थोड़ा उल्टा पुल्टा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी रेसिपीज देखी हैं उसमें किसी में भी अनियन और गार्लिक नहीं था. तो आई थिंक इट डज़ नॉट गो इन द कोरमा नेचुरली, बट इफ़ यू वांट इट you can add it somehow, adjust it like we usually do, oil and then onion and
garlic, but I'm not adding it. So yeah, just a heads up.